Hey, hello everyone. This is Professor Nilesh Ananwadi welcoming you from my YouTube channel. I have two YouTube channel. One is Anandwadi Biology classes for those who are studying and preparing for the NEET and CET, means undergraduate student. And second channel is NET-SET exam preparation for those who are giving a NET-SET exam like preparation. UGC CSIR NET and you can say UGC SET means our you can say any you can say state exam like Maharashtra State MHT SET and you can say GT SET Gujarat State like it. So गाइस आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक किंगडम प्लांटी के ऊपर. तो किंगडम प्लांटी नेट सेट के लिए और 11th-12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किंगडम प्लांटी में जैसे आप सभी लोगों को पता हो किंगडम प्लांटी के दो टाइप होते हैं. एक होता है क्रिप्टोगेम्स, एक होता है फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स मतलब स्पोर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट और इसके अंदर फिर से तीन कैटेगरी आती है. एक आती है अलगी जिसे हम थैलोइड बोलते हैं. दूसरा आता है ब्रायोफाइट्स जैसे हम एम्फीबिया कहते हैं और तीसरा होता है टेरिडोफाइट्स जैसे हम फर्स्ट वस्कुलर प्लांट के तौर पे जानते हैं. And in phanerogam there are further two categories, gymnosperm, angiosperm. Gymnosperm means non-flowering plant plus they are having open seed and angiosperms are having closed seed. Seed के ऊपर covering होती है and plus they are flowering plant. तो आइए डिटेल में हम डिस्कस करते हैं each and every basic points about the kingdom plantae. Okay guys, so let's begin. Hey, hello everyone. दिस इज प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी. जैसे मैंने अभी आपको इंट्रो दिया मेरा एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो नीट प्रिपरेशन से एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड की बुक में से है. चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टॉपिक है एकदम छोटा सा टॉपिक है. वो टॉपिक है किंगडम प्लांटी. तो इस किंगडम प्लांटी में हम आपको शॉर्ट में अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सबके बारे में मैं आपको डिटेल शॉर्ट में बताऊंगा इस टॉपिक में. क्योंकि डिटेल में क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी के बारे में नहीं दिया हुआ है. और इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड में से यूनिट 1 में थर्ड जो चैप्टर है वो टॉपिक ही स्पेशल, उसका नाम है किंगडम प्लांटी. तो वो किंगडम प्लांटी में हम ये चीजें पूरी डिटेल में देखेंगे. तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक. मैं एक एक कैरेक्टर आपको समझाता हूँ. ये एनसीईआरटी का पूरा मटेरियल है. Kingdom Plantae. All the members of Kingdom Plantae means it includes all the eukaryotic chlorophyll containing organism plants. मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी में है वो पहले तो यूकैरियोटिक होंगे. means they must be containing true nucleus at the center of cytoplasm and plus they must contain chlorophyll molecule. Second character, a few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और parasites plants. मतलब कुछ प्लांट ऐसे हैं किंगडम प्लांटी के अंदर जो पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक हैं, मतलब वो खुद फूड भी बनाते हैं और दूसरों के ऊपर भी डिपेंड है. और उनमें से कुछ इंसेक्टिवोरस भी है और कुछ पैरासाइट भी प्लांट भी है, मतलब इन्फेक्शियस प्लांट भी है. like a bloodworts and venous flytraps are the example of insectivorous plants and cascuta is an example of a parasitic means infectious plant. तो ब्लडवर्ट्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप्स जो प्लांट होते हैं वो प्लांट इंसेक्टिवोरस कैटेगरी में आते हैं और कैस्कुटा प्लांट जो है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शियस प्लांट कैटेगरी में आते हैं. Third, plant cell have a chloroplast and cell wall may you can say mainly made up of cellulose. Yes, प्लांट जो भी सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर फिर वो अलगी क्यों ना हो, ब्रायोफाइट्स क्यों ना हो, टेरिडोफाइट्स क्यों ना हो, एंजियोस्पर्म क्यों ना हो या जिम्नोस्पर्म क्यों ना, इनमें से कोई भी कैटेगरी हो, प्लांट सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा. बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनल विच कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट and mainly it is made up of cellulose. Sorry, I mean to say cell wall is mainly made up of cellulose. Plant may contain other material also like hemicellulose, pectin, lignin, starch, but mainly it is cellulose. Kingdom Plantae includes algae, bryophytes, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. I'll tell you in short. Algae are generally called thalloid body just because algae cannot differentiate it into root, stem and leaves, so they are called as a thalloid body. Bryophytes are generally termed as amphibian plants just because
Actually, amphibian means who can found in water and as well as on the land. But these are plant; they will not move. So why bryophytes are called as the amphibian plant? Just because they required water for their life cycle as well as you can say fertilization. They require for water for the life cycle completion as well as for fertilization. So they are called bryophytes. Third category is a pteridophyte where P is a silent. Pteridophytes were called as the first vascular plant on earth because they were the first plant in which xylem and phloem tissue was to be found. Gymnosperm are generally open seeded plant and angiosperms are closed seeded plant. Plus one thing, gymnosperm do not possess flower fruit, but angiosperm possess means mainly gymnosperm do not possess flowers and angiosperm mainly contain flowers. So out of these all five category flowering plants are angiosperm plants. लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस मतलब प्लांट की लाइफ साइकिल दो फेजेस में डिवाइड होती है द हैप्लॉइड द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक पहली जो फेज है वो डिप्लॉइड है डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइटिक अब स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है ओरिजिनल वन प्लांट इज कॉल्ड एज अ स्पोरोफाइटिक प्लांट and haploid gametophytic generation means when they produces gametes. The phenomenon is known as the alternation of generation. प्लांट की लाइफ साइकिल को हम जनरली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मान लो देयर इज वन प्लांट I show you here. This is a one plant. This one plant produce male sex organ, female sex organ, male sex organ, female sex organ, and their gametes reproduce with each other. Means they fertilize with each other. After fertilization, there is either formation of a spore or either seed, which turn into the complete new plant. This is alternation of generation. You can call life cycle. So I hope so guys you like my video, you understood my video. If you are still interested to watch my further new videos, so please नीचे दिए हुए गए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप बेल आइकन दबा देते हो तो मेरे हर नए वीडियो एनसीईआरटी नीट के ऊपर आपके मोबाइल में आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने होंगे सो थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत